हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? इन 1978 अ वेरी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट, शिकागो से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट मिस्टर राज कृष्णन ने ये बात कही। He said that इंडिया की जो ग्रोथ रेट है दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज फ्रॉम 1950 टिल 1980 इंडिया की ग्रोथ रेट मेयर 3.5% रही है। नाउ ये जो ग्रोथ रेट है इट सिग्निफाइज दैट इंडिया इज नॉट डूइंग वेल वेयर वर्ल्ड इज डूइंग वेल। साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज अच्छा कर रही हैं, एशियन मिराकल कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान वाज डूइंग बेटर, लेकिन इंडिया में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। नाउ इसके दो पहलू हैं। द फर्स्ट इज द पीपल हु क्रिटिसाइज, दे से it is in the genus of Hindus which is culture and religion, यानी ये हिंदूज के जीनस में है कल्चर रिलीजन जिससे ग्रोथ इंपैक्ट होती है। अब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट का ये थॉट प्रोसेस था, बट एक दूसरा व्यू भी है। द सेकंड व्यू सेज दैट इंडिया इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस of lack of reforms, license Raj, quota Raj, inspector Raj, lack of structural reforms and centralizing approach जहां socialist pattern of economy थी। तो ये कहानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रुकती नहीं है बिकॉज ये डिबेट अभी चलेगी। So let's understand. Today India is growing at a growth rate of 7%, 6%. From 3.5% India has reached. In fact, 80s के बाद itself growth हमारी बढ़ गई। 80s और 90s के फेज में growth rate was more than 5%. So let's understand this. The term Hindu rate of growth was coined where the growth rate was 3.5 to 4% from 1950s to 1980s. The phrase aimed to highlight the persistent economic stagnation across decades despite changes in government, war, famine, implying deep structural issues embedded in the economic model. यानी कहने का मतलब ये है, it is signifying कि growth rate India के challenges भी है। The data shows that India already began outpacing Hindu rate, that is 5.8% in this phase. यानी 80 to 90 के फेज में इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 3.5% से 5.8% पहुंच गई। एंड क्रिटिक्स कहते हैं कि दिस हैज मोर टू डू विद रिलीजन, कल्चरल फैक्टलिज्म एंड ये कॉलोनियल माइंडसेट का भी एटीट्यूड है। इनफैक्ट आर्टिकल में ये बात कही गई है, द हिंदू का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का ये एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल है, एंड इट सेज दैट इंडिया में देयर वर स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज, यानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, लाइसेंस कोटा राज, हैवी स्टेट कंट्रोल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज एंड लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट दिस वाज द फेज जहां पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ स्टैग्नेटेड नहीं थी, इट वाज वेरी लो। वन ऑफ द मेजर फैक्टर वाज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, which means हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका आउटपुट हमें कम मिल रहा था। अगर सीओआर हाई है मतलब आप मोर कैपिटल लगा के आरओआई आपका कम है। सो दिस वाज द चैलेंज, यानी लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लाइसेंस कोटा राज। बिकॉज द सेम जीडीपी, द सेम पीपल डिड वेल, जब ये रिजिडिटीज कम हुई, खत्म हुई, तो इंडिया इज टुडे वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। टुडे देयर इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इंडिया एक नए लेवल पर है। ये बात हमें पूछनी होगी कि इस सोच के पीछे क्या हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व थे और वाज इट linked with culture and religion? Now these are things that you need to ask yourself, but one thing is clear from UPSC aspirants mindset that this was only about the structural problems of the economy, the license quota raj system, and that is how economy did not function. Post 991 इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो हायर ग्रोथ रेट में शिफ्ट हुई, एंड द फ्रेज persist in public discourse sometimes resurfacing, यानी ये पब्लिक डिस्कोर्स पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जब जब कंपैरिजन होता है, हिस्टोरिकल कंपैरिजन, द ग्रोथ रेट ऑलवेज कम्स इनटू द डेटा पर्सपेक्टिव। नाउ पीपल हु आर टारगेटिंग यूपीएससी, रिमेंबर यू नीड अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस एंड मेंटरशिप। नाउ व्हाट डू यू रिक्वायर? यू नीड स्पीड, यू नीड लेस सिलेबस, स्टडी टाइम, सेव टाइम, स्पीड एंड आउटकम। दैट इज द थर्ड फॉर्म, यानी फोकस ऑन आउटकम नॉट ऑन इनपुट। And that is where हमारे mentorship प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है accountability. We will make you accountable for the work you do, whether it is test, answer writing, anything. So you can target the macro लक्ष्य, हमारा लक्ष्य प्रोग्राम है, there's a biggest program of 12 to 15 months. यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, material, tests, classes, notes, guidance program, one-to-one study plan, everything. And then there are specific program for prelims and mains, and then we have optional courses also. You can reach out to the team and tell them that you require
have a one-to-one session, get a free session, and also you can come in our webinar and the inner circle session, and you can take your preparation next level. So Hindu rate of growth की हम बात कर रहे थे. Let's understand some MCQs. The term Hindu rate of growth refers to low population growth rate in between 1950 and 1980. No, it was about the low growth rate. The low per capita income, no. Low GDP growth rate in India before liberalization. So when you look at it, so C is the closest answer because other talks about low per capita income and low population growth. एक और interesting fact है कि इंडिया की growth rate from 1950 to 1980 it was 3.5%. But अगर हम per capita income की बात करें, if you talk about per capita income, one thing is clear that in this phase, the when we see the per capita income growth rate, वो mere it was 1.1%, which means जब population ज़्यादा grow करती है, तो आपका growth rate का जो actual return होता है in terms of per capita, it comes down heavily. And this was also a phase from 1950 till 1990, or rather even today, India witnessed a phase called population explosion. So because of that, जो आपकी overall effective growth rate है per capita income, that is heavily impacted. खैर इसका आंसर C है. So low GDP growth rate in India before liberalization. Okay, it does not refer to population per capita income, only agricultural growth or agricultural growth, though high population growth rate during the period meant per capita income remained low. Now this is a very interesting question. Which of the following arguments have been made to challenge the validity of the Hindu rate of growth concept in the context of India's economic history? India's GDP growth rate from 81 to 91 averaged 5.8%, exceeding the Hindu growth rate, and that is right. India's growth rate was more. 81 to 91 tak, the growth rate actually increased. So one statement is right. The term unfairly linked economic stagnation to religion and culture rather than structural economic factors. This is also right because the same economy, वही economy अच्छा perform कर रही थी high growth phase. So this is definitely a case of structural rigidities, economic stagnation, high capital output ratio, and of course, maybe we did not allow private investments to come. So this is the second statement, which is also right. The growth during 1950s, 60s were higher than the 90s. ये गलत है. इस phase में तो growth rate हमारा lowest phase में था, and indicating variability, not a constant low rate. Now this third statement is wrong. High population growth during earlier decades kept per capita income growth low even if the GDP grew. बिल्कुल सही बात है. जब population आपकी grow करती है तो per capita income growth कम हो जाती है. तो statement 1, 2 and 4 is the other correct choices, and thereby the C is the answer. Now these are things that you need to know because UPSC के जो prelim से question है, they are trend based, and they are trend based. You need to understand them. So these are the statement. और मैं एक टेलीग्राम चैनल अभी शेयर करूंगा. उस टेलीग्राम चैनल पर आप ये PDFs आपको शेयर हो जाएंगे. You can go to them. Now critically examine the concept of Hindu rate of growth in the context of India's post-independence economic history. Was the low growth primarily due to cultural fatalism as implied by the term, or structural economic factors? Discuss with relevant evidence. The phase Hindu rate of growth was coined in 1978 to capture the structural low growth rate of India. And when we see a very closer look, it was not the cultural factors or Hindu civilization factors, but rather the structural economic problems. So the history and evidence against cultural fatalism, GDP growth rate accelerated. The same GDP did very well जब आपने economy open किया, well above the Hindu rate. This demonstrates the growth restrictions were not due to cultural inertia, but to policy and outcome of license quota raj, import substitution, state control, and limited private dynamism or investment. So growth rate इसलिए नहीं हो रही थी कि हमारे हिंदू कल्चर में या रिलीजियस में ग्रोथ को पुश करने का अप्रोच नहीं था. It was mainly because of this factor. Now we'll conclude it. Hindu rate of growth is a misnomer if we see it from the prism of culture and religion. Hindu rate of growth also signifies that India, if was given an opportunity, things would have been different. However, we should learn from the mistake and we make sure the future growth trajectory is based on reform, innovation, and the spirit of entrepreneurship that will decide the future. Okay, so that is all. Thanks for watching. Do like the video, subscribe to the channel, and be regular for preparation updates. And if you really want to crack the exam, be consistent. Take care. Bye.